وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we begin from verse number 23 of Surah Al-Hajj. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyibi min al-qawl وهدوا إلى صراط الحميد. Verily Allah will admit those who believed and did righteous deeds into gardens flowing from beneath it rivers. They shall be adorned in it of bracelets of gold and pearls, and their garments in it shall be of harir, means silk. And they had been guided to the purest of the word, and they had been guided to the path of the praiseworthy. बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान ले आए और अमल के नेक बागात में बहती हैं उसके नीचे से नहरें वो पहनाए जाएंगे उसमें कंगन सोने के और मोतियों के और उनका लिबास होगा उसमें रेशम का और वो हिदायत दिए गए या रहनुमाई किए गए पाकीज़ा खौल की तरफ और वो रहनुमाई किए गए उस रास्ते की तरफ जो तारीफों वाला. Purest of the word refers to the kalime shahada, the Quran and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. It's the purest of the word. It's a kalime tayyiba, on the basis of which every person enters into the fold of Islam consciously. Followed by, of course, the verses of the Quran, which are also purest of the word. And then followed up with the authentic sayings of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is also purest of the word. ये कलिमे शहादा, फिर कुरान की आयतें और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के कौल, अक़वाल, ये सब मिलकर जो है purest of the word बनते हैं. So Allah subhanahu wa ta'ala says, those people who responded and recited the kalime shahada consciously strengthened their relationship with the Quran and the authentic teachings of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, for that is only the path of the praiseworthy shown by Allah subhanahu wa ta'ala. And for such people, Allah subhanahu wa ta'ala will admit them into paradise. ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर जन्नत में जगह देगा जहाँ पे जो है नहरें बहती होंगी और वगैरह वगैरह, वहाँ पे जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नियामतें उनको दिए जाएंगे. इन्नल लज़ीना कफरू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासी सवाअनिल आकिफु फीही वल बाद व मन युरिद फीही बिल हादिम बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम. Verily those who disbelieved and hindered from the way of Allah and the masjid sacred, which we have made it for the people equal for the dweller in it and for the visitor. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ, and whoever intends in it evil action, bizulmin, with wrongdoing, we shall make him taste of the punishment painful. बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से जिसको हमने बनाया लोगों के लिए यकसा या बराबर, रहने वालों को उसमें और दूर से आने वालों को भी, और जो कोई चाहते हैं उसमें गुनाह का काम जुल्म के साथ हम चकाएंगे उसको दर्दनाक अजाब. मस्जिद हराम, Kaaba and the entire city of Makkah, Allah has sanctified it. हुर्मत वाली जगह है.
और लोग वहां पे खालिस अल्लाह की इबादत करने के लिए आए, हज और उम्रा की नियत से आए, अल्लाह की इताअत और बंदगी करने के लिए आए, नमाज पढ़ने के लिए, तवाफ करने के लिए, रुकू और सुजूद करने के लिए वहां आए. People need to come to that sanctum sanctorum of the Kaaba with an intention to either do Hajj or Umrah, to do the tawaf of the Kaaba, to pray, to bow down, to prostrate, and with an intention to please Allah subhanahu wa ta'ala and with fear of Allah in the hearts. Contradictory to this, if anybody has an evil motive and wants to do any harm or tries to desanctify that place, Allah subhanahu wa ta'ala is warning that person of a punishment painful. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Follow these verses very carefully, for this is talking about the subject of Hajj, which is now the season, and all the Hajis and the people who had decided and made their intention to perform the Hajj this year have all departed, and Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, they've all reached more or less the place of Makkah, and from tomorrow onwards they will begin their journey to Mina, followed by the night followed by the Arfa on 9th, that is the following day, and evening their halt at Muzdalifah, and then return to Mina to complete their other formalities. Now in the subject of Hajj, what has Allah subhanahu wa ta'ala got to say? And see Allah subhanahu wa ta'ala's plans exactly at the time when the Hajj season is just about to begin. We are coming across these verses. ये Allah subhanahu wa ta'ala की शान है, उसकी किताब की क्या क्या बरकतें हैं, उसकी क्या क्या मौजिज़ात हैं. कभी हमने सोचा कि बराबर हज के मौके पर हम ये आयतें पढ़ेंगे? सोचा भी नहीं था. कल सुबह लोग मीना को निकल रहे हैं और हम आयतें आज रात को पढ़ रहे हैं. सोचो कि अल्लाह की शान. अल्लाह जो है अपने खालिस बंदों को जो कुरान से हिदायत हासिल करना चाहते हैं, बराबर वक्तन फवक्तन उनको हिदायत देते रहता है. Timely reminders Allah gives. We are in a state of confusion. Correctly, when we recite the Quran, those verses will be there, which gives us solution. There will be such occasions when we may be thinking something wrong, and Allah subhanahu wa ta'ala will guide us by making us go through those verses of the Quran exactly relevant to our difficulties. It is Allah subhanahu. You must have experienced it. I have experienced it plenty of times. मैंने कई बार ऐसा तजुर्बा कर चुका हूँ कि बराबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत रहनुमाई करते रहता है, दिमाग में उलझन है, कोई गलत ख्याल है, बराबर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहनुमाई कर देता. कल मीना को जा रहे हैं लोग, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका बयान आज सब्जेक्ट हज पर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवा रहा है. ये अल्लाह की शान है. खुशकिस्मत है वो लोग जो कुरान क्लासेस को जो है रेगुलरली अटेंड करते हैं, and who take the best benefit out of these classes by attending them regularly, for we are going to be benefited at the end of the day, nobody else. And let me also, having raked up this topic of Hajj, share a few points which may be relevant to both you and I. I've already mentioned about this when Zil Hajjah started, and I spoke about the importance of the first 10 days of Zil Hajjah by quoting the verse Wal Fajri wal Layalin Ashr, by the dawn and by the night's 10, about which I explained to you through the verses of the Quran as well as the hadith of the Prophet ﷺ, the importance of Zil Hajjah and the first 10 days in particular, which are even more important. See, the month of Ramzan is the most important month among the other months, but the 10 days of Zil Hajjah are the most important 10 days, even more important than the last 10 nights of Ramzan, and these 10 days are the most important among all the 365 days of the year.
रमजान सबसे मुकद्दस महीना है, लेकिन दिनों के एतबार से ये 10 दिन सबसे मुकद्दस है. In matter of the months, Ramzan is the most important month. And in matter of the days, 10 days of Zilhajjah are the most important days of the entire year. Particularly on the day of Arafah, when Allah subhanahu wa ta'ala grants forgiveness in large numbers, to an estimate that such kind of forgiveness which Allah grants on the day of Arafah, it does not grant on any other day. अरफा के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने लोगों की मगफिरत करता है, वो किसी और दिन में इतने लोगों की मगफिरत नहीं होती. ये सब हम जानते हैं. But I think it's only a reminder. You all know it, I'm sure. I'm not going to give you a long lecture. You all know it. But you know, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Keep reminding. For reminders always benefit the believers. नसीहत करते रहो, याद दहानी कराते रहो. मोमिनों को याद दहानी कभी भी नफा बख्श होती है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो है जिलहज्जा के पहले 10 दिन भी तकरीबन हमारे आज 7 दिन खत्म हो गए हैं हमारे इंडिया के एतबार से. अब बचा कल 8वां दिन, फिर इंशाल्लाह चाशुम्बा जो है हमारा 9वां दिन होगा, जहाँ पे इंशाल्लाह हम सब रोजे रखेंगे. वैसे भी जिलहज्जा के पहले दिनों में भी कई लोग जो है रोजे रखते थे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रोजों को कबूल करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जहन्नम से, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला will send them or keep them away from the hellfire to a distance of 70 years for one roza. And many of you, alhamdulillah, have been keeping rozas right from the day Dhul Hajj has begun. Allah accept all your fasting and your duas and all the good deeds that you have done. Now we are just left with only 3 days, out of which only 2 days for fasting. And of course, the Zil Hajjah on the 10th day of Zil Hajjah, which is Eid al-Azha, we will all, inshallah, be proceeding with our Eid Salah, followed by Wasalli li Rabbika Wanhar. Pray and then go ahead with the sacrifice. For the sacrifice done on the first day of Zil Hajjah, that is the 10th day of Zil Hajjah, is the most important, followed by its level slightly reduces the next day and then reduces the next day. सबसे अफजल तरीन जो कुर्बानी है वो जिलहज्जा के 10वें तारीख को जो की जाती है, सबसे अफजल तरीन है. फिर उसके बाद जो है उसका मर्तबा थोड़ा कम होते चला जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन वगैरह. All of us inshallah will be fasting, of course, on the day of Arafah, which Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive the sins of the people for 2 years, 1 year which has passed and then ensuing year जो 1 साल गुजर चुका और फिर ये होने वाले साल के जो है गुनाह अल्लाह माफ कर देता है. ऐसे मौके, ऐसे opportunities don't come so often. Today we are alive, we may not be there the next moment, the next day, the next week, the next month, the next year. No, there's no guarantee at all. Is there any guarantee? No guarantee. Whatever we can grasp and grab opportunities, that will be the wise step forward. यही अक्लमंदी है. देखा जाएगा, सोचा जाएगा, गर्मी है, काम है, फला है, ये है, वो है, इसके तो लिस्ट की कभी खत्म नहीं होती. This list doesn't end. So here Allah subhanahu wa ta'ala is talking about these first 10 days of Zil Hajjah, particularly the first 10 days of Zil Hajjah, as I said, and talks about the Hajj pilgrimage, which is such a great event. It's an international conference where people from different parts of the world belonging to different ethnicities, who speak different languages, who have different complexion, just come and converge there with that common denominator, that is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. This is the only kalima which is called as the Tayyibi min al-Khal, or Kalime Tayyiba, it is called. This is only this which brings all the believers from different parts of the world to that place, and all of them converge there. And Allah, Labbaik, Allahumma Labbaik. It echoes, resonates all over the Kaaba. What a scene! क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी है, उसके हिदायत का क्या क्या जरिया है कि लोगों को मगफिरत करना ही चाहता है. And Allah creates opportunities to forgive people. Fortunate are those who respond to it, and fortunate are those who don't care about it. And pray to Allah subhanahu wa ta'ala of those who yet not completed the Hajj. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the means, the strength to perform the Hajj at the earliest. Never postpone it. The moment you feel you are fit enough, you have the wherewithal, the money, proceed. जैसे ही जो है, जो ही तुम्हारे को जो है पैसे हाथ में आ जाए, हज करने के लिए ताकत है, ताखीर मत कीजिए, फौरन कर लीजिए.
पूरी जिंदगी की जो है पूरा इक्वेशन बदल जाता है हज के बाद. The whole perception of Islam, the complete transformation of our lives take place when a person performs the Hajj with all sincerity, with the fear of Allah called taqwa. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of those who have yet not performed the Hajj. And for those who perform the Hajj, let us keep our minds connected with the Hajjis and try to do our best in this part, in whichever part of the world we are in, and try to engage and deeply indulge in the remembrance of Allah by reciting the Kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Lillahi alhamd. Just a matter of another 3 days left. Let's make the best use of it. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to make the best use of this last 3 days now which are left in the best manner possible and not waste our time, not indulge in the social media and gossip and non-productive activities, but more in sadqa and khairat and fasting and tazkir and tamheed and takbir and tahleel and so many good deeds, dawah and recitation of the Quran, nawafil prayers, tahajjud, all whatever we can, du'as, istighfar. Don't forget to pray for the Muslim world as well. May Allah subhanahu wa ta'ala accept these good deeds, what we do inshallah in these few days. Ameen ya Rabbal Alameen. And when we showed to Ibrahim alayhi salam, where is Bavwana? Actually showed means showed the exact spot. Bavwana means showed the exact spot. And when we showed the exact spot to Ibrahim alayhi salam, the place of the house or the site of the house, that not you associate partners with me anything, and purify my house for those who do tawaf and those who stand and those who bow down and those who prostrate. Wazzin finnas, and proclaim among the people, or make an announcement among the people for Hajj. Yatuka rijalan, they will come to you by foot. Wala kulli zamir, and upon every lean camel. They will come from every distant mountain highway, Fajjin Amir, that they may witness Manafiya lahum, the benefits for them, and remember the name of Allah fi ayyamim ma'lumat, in the days appointed, upon what He has provided them of the bahimatul anam, beasts of the cattle. So eat of it and feed ba'is al faqir, the destitute and the needy, or the one in distress and the poor. Summal yakhzu tafasahum, then let them complete their Hajj rituals. Wal yufu nuzurahum, and let them fulfill their vows. Wal yattawafu bil bayt al atiq, and let them do tawaf of the ancient house. और ऐलान करो, sorry, और जब हमने दिखाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा की जगह कि ना तुम शरीक ठहराना मेरे साथ किसी को, और पाक साफ रखना मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, खड़े रहने वालों के लिए, नमाज में खड़े रहने वालों के लिए, और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए. और ऐलान करो लोगों में हज के बारे में, वो आएंगे आपके पास पैदल और हर दुबली ऊंटनी पर, वो आएंगे हर दूर दराज जगह से, ताकि वो पाए नफा उनके लिए जो वहां पे है उनके लिए, और वो याद करे अल्लाह को, अल्लाह के नाम लेकर उन मखसूस दिनों में या मुकर्ररा दिनों में इस पर जो रिज़्क़ दिया उनको जानवरों में से जो मवेशी चौपाए हैं. फिर खाओ उसमें से और खिलाओ तंगदस्त मोहताज को. फिर चाहिए कि वो मैल कुचेल को जो है दूर करे, और वो पूरे करे अपने नजरें और तवाफ करे कदीम घर के, यानी खाने काबा का तवाफ करे. So Allah subhanahu wa ta'ala tells Ibrahim alayhi salam, make an announcement. Who was there at that time? Just think. Was there anybody? Not a soul. Allah is telling Ibrahim alayhi salam, after he constructed the Kaaba, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. And when Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam completed the construction of the Kaaba, they did the dua, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. You know the meaning of it. After construction of the Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala told Ibrahim alayhi salam, now make an announcement. Ask the people to come for Hajj. Maybe they completed that at the time when it was Zil Qaeda, and then the Zil Hajj Mahina started. So Allah subhanahu wa ta'ala is asking Ibrahim alayhi salam to make this announcement. Who was there? Nobody there at that time.
But Allah subhanahu wa ta'ala's instruction is never meaningless. Allah subhanahu wa ta'ala जब कहता है कि ऐलान करो, कौन थे उधर? कोई नहीं था, फिर किसको सुनाए? तफसीर में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक रूहों को सुनाया। पाक रूहें कौन है? अभी दुनिया में नहीं है, आलम अरवाह में। Because all of us have already been created by Allah, our souls have already been created, that we didn't come into this world, but Allah subhanahu wa ta'ala has made this appeal and this announcement of Ibrahim alayhi salam reach all those who yet to come into this world. तमाम पाक अरवाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुना दिया इब्राहिम अलैहि सलाम का जो है वो ऐलान। And imagine after that how the people started coming for the pilgrimage every year, year after year. Estimated almost 2.5 million this year. Alhamdulillah. Allah keep them all safe. May Allah subhanahu wa ta'ala help them to perform their pilgrimage and their Hajj in a manner as they should do and do justice to it. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant all of them Hajj Mabrur and bring them back safely with a complete transformation in their perception of Islam, that they may become da'is in the future, that they may become people who contribute for the cause of Islam. Ameen ya Rabbal Alameen. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े तादाद को जो है आज जो हज के लिए जाते हैं, साल साल जो है ये तादाद बढ़ती जाती है। उस वक्त पे एक इंसान भी नहीं था, लेकिन आज अरबों जो है लोग हज करते हैं। अल्लाह उन सबको हज मबरूर जो है अता करे और उनकी दुआओं को कबूल करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह उनको जो है दीन की सही समझ बूझ और दीन की खिदमत करने वाले अल्लाह उन सबको बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुवा खैरुल लहु इंदा रब्बी व उहिल्लत लकुमुल अनआमु وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخسفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. That means that is the way it is. That is the way the Hajj will be performed. This is what Allah is saying. Zalika. Zalika means that. And whoever honors the symbols of Allah or the sanctities of Allah, then it will be better for him near his Lord. And has been made lawful for you the cattle except what is recited upon you. So stay away. So stay away from the abomination of the idols and stay away from the word lying. Turning exclusively towards Allah without associating partners with Him. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, and whoever associates partners with Allah, then as if he has fallen from the sky, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, then have snatched him away the birds, أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ, or blown him away the wind to a place sahiq, distant or remote. That is the way it is. And whoever honors the symbols of Allah, then verily it is from the taqwa al-qulub, piety of the hearts. For you in it are benefits until a term determined, then its place of sacrifice is towards the house ancient. ये मैंने ये तरीका है हज करने का, और जो कोई एहतराम करे अल्लाह की हुर्मत वाली चीजों के, तो वो बेहतर होगा उसके लिए उसके रब के यहाँ। और हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए चौपाए सिवाय जो पड़ी गई तुम पर, बस दूर रहो बुतों की गंदगी से और दूर रहो हर झूठी बात से। लौट जाओ अल्लाह ही के आगे या मुंह फेर लो अल्लाह ही की तरफ बगैर शिर्क किए हुए उसके साथ या किसी को शरीक ठहराए हुए उसके साथ। और जो कोई शिर्क करे या जो कोई शरीक ठहराए अल्लाह के साथ औरों को, तो गोया कि वो गिर चुका आसमान से, फिर उचक लिए गए उसको परिंदे या उड़ा दी उसको हवा एक दूर की जगह, यानी यही सजा है। और जो कोई ताजीम करे एहतराम करे अल्लाह के निशानियों के, तो बेशक वो दिलों के तकवा का मामला है, तुम्हारे लिए उसमें फायदे हैं एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उसके कुर्बानी की जगह उस कदीम घर के। हाँ, what are these हुरुमातिल्लाह and शआइर Allah? The very spot where the Kaaba itself belongs to the Hurumatillah and the Sha'air Allah.
Then you have the Mataf. Then you have the Hajar Aswad. Then you have the Maqam Ibrahim. Then you have the Zamzam water. Then you have the Sa'i. Then Hajis go to Mina. Then they travel to Arafat. Then they come to Muzdalifah in the night. Then they return to Mina again on the 10th. And then they proceed to Makkah to perform the Hajj, the Tawaf Hajj. Then the stoning at the Jamrat. Then followed by the sacrifice. Then shaving of their heads. Then removing of the Ihram. Then staying there again in Mina for the 11th and the 12th. Some stay even on the 13th. During this complete 6 days, beginning 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 5 days. Sometimes if somebody wants to say on the 13th, 6 days. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th. No quarreling, no wrangling, no bickering, no gossiping, no evil action, no evil deeds. To the extent that you cannot even meet your wife. Meet your wife, you understand what I mean. You cannot sleep with her. 6 days, extensive training for the Hajis, extensive training, except Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, which resonates and echoes throughout. And all of them recalling all the mistakes in the past which they have done. Particularly on the day of Arafah, which is the most important day for among all the 5 days or the 6 days. Praying to Allah, crying before Him, asking Allah's forgiveness. Allah has proudly asked the angels, "Kya chahte hain ye bande?" What do these people want? Not that Allah does not, feeling very proud. Allah इतना खुश रहता है उस दिन कि कोई इम्तिहान नहीं और फरिश्तों से पूछते हैं क्या चाहते हैं मेरे बंदे. The angels tell Allah, they asking forgiveness Allah. Allah said, tell them I forgiven all of them. कह दीजिए मैं उन सबको जो है माफ कर दिया, उनको बख्श दिया. सोचिएगा, millions and millions of Hajis were going there. And can we connect with them? Yeah, we too, by fasting on that day, keeping our eyes and hearts and our minds focused on those particular rituals which the Hajis are performing. And we also ask forgiveness from Allah. Allah definitely will not deprive us also from forgiveness. Allah जो है हमको भी महरूम नहीं करेगा, बशर्ते कि हम पूरे संजीदगी के साथ, पूरी यकसुई के साथ हमारे दिल और दिमाग को उन हाजियों के साथ हम जो है जुड़ जाएं और जैसे वो मशक्क़तें उठा रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अगर हम भी जो है उस दिन रोज़ा रखें, गिड़गिड़ाए, बिलबिलाए, अल्लाह के सामने जो है हम अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए इल्तिजा करें, तो क्या अल्लाह हमको महरूम करेगा? डेफिनेटली नॉट. पूछता है अल्लाह क्या चाहते हैं लोग. बड़ी शान से बाद में अल्लाह बोलता है कह दीजिए कि मैंने सबको मग़फ़िरत कर दी. और यही मग़फ़िरत का परवाना लेने के लिए हम दूसरे दिन ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ते हैं. Just as though after the 30 days of fasting in Ramzan, we get an award on the 8th day of Eid al-Fitr. Likewise, the Hajis, after all that hard work, they of course forgiven on the 9th day, and we go to take a reward on the 10th day when we go to perform the Eid al-Fitr. Provided we have utilized these days in a manner and done justice to it without squandering it away. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all. Ameen ya Rabbal Alameen. So Allah's ultimate contention is stay away from shirk. This very entire journey and this entire pilgrimage gives you a loud message that do not associate partners with Allah. You have come here only because Allah gave you the hidayat. Allah enabled you. And when you return, there should not be any element of shirk in your lives. Hunafa lillah. तुमने आए हो अल्लाह के बुलावे पर. अब यहाँ से जब जाओगे तौहीद के सिवा कोई और तोहफा और कोई और ज़ख़ीरा नहीं ले जा सकते सिवाय के तौहीद. You not carry another gift, a better gift or a better treasure than the ideology of monotheism.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُم وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And for every nation we have provided their religious ceremonies or their Hajj rituals, that they may remember the name of Allah upon what He provided them of the beasts of cattle. So your God is God one. Then to Him aslimu, submit. Wabashir al-mukhbitin, and give glad tidings to those who are humble. Those, when is mentioned Allah, are fearful their hearts or tremble their hearts. And those who are steadfast upon what difficulties have befallen on them, and those who establish salah and from what we have provided them, yunfiqun, they spend. और हर उम्मत के लिए हमने बनाया, उनके लिए उनके हज के अरकान हमने दिखाया, उनके हज के अरकान, ताकि वो याद करे अल्लाह का नाम उस पर जो रिज़्क़ दिया उनको, उन जानवरों में से, चौपाए मवेशी जानवरों में से। बस तुम्हारा माबूद एक है, उसी के आगे तुम सरे तस्लीम खम कर दो और खुशखबरी दो आजिज़ी इख्तियार करने वालों को, जो जब वो लोग जब लिया जाता है अल्लाह का नाम तो कांपते हैं उनके दिल, यानी उसकी खशियत से। और जो लोग साबित कदम रहते हैं इस पर, जो मुसीबतें उन पर आती हैं, और जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उनको देते हैं उसमें से वो खर्च करते हैं। So all these are those excellent components and ingredients and inputs which are very, very necessary in while performing the Hajj. And even for besides the Hajj, these are excellent qualities that we need to foster in our lives. या ऐसे जो है सिफात हैं जिस हम सबको इख्तियार करना चाहिए, खुसूसी तौर पर हाजियों के लिए, जिसमें आजिज़ी हो, कोई किस्म की घमंड या किबर की कैफियत ना हो, और फिर नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, यानी सब जो है ये सिफात उनके अंदर ऐसे पैदा हो जाए ताकि आखिरी सांस तक जो है ये सिफात उनके अंदर बाकी रहे। To enable them to foster and inculcate such kind of qualities when they go for Hajj, so that these qualities are always strongly ingrained in them until their last breath in this world. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to inculcate these qualities in our lives as well. Inshallah, we will have a class tomorrow as well. We will not have class on Wednesday and Thursday. Wednesday, many of our brothers who are from the Gulf will inshallah be celebrating Eid al-Adha. So respecting their sentiments and their joy, we will not disturb them, and we will also not have class on Wednesday and Thursday. Inshallah, we will have class tomorrow. Further details about Hajj, particularly about Budna. What is Budna? What are the details about this word, which is immediately coming in the next verse? Further details about Hajj and its rituals, which are so excellent, as I said in the beginning. अल्लाह की भी क्या शान है कि बराबर हमको जो है हज का मौसम और हज की आयतें हमारे को जो है सामने पेश किया. How can we miss an opportunity like this? Allah has been so graceful right from the beginning, and this is a proof how much graceful Allah is upon all of us. In spite of we being so negligent, complacent, and neglectful, Allah subhanahu wa ta'ala still is so gracious and merciful. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be grateful to Him, value this opportunity which Allah has given us. Inshallah, looking forward to seeing all of you tomorrow, same time. Jazakallahu khair. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.